अभी हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और अभी एक तरह से मेन कंटेंट ऑफ इस बुक का शुरू होता है चैप्टर नंबर 2 से। 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ एक्चुअली क्या है, और बहुत ही डीपर इंसाइट हमें इससे मिलने वाली है। तो इसका फर्स्ट कोटेशन है, इफ़ यू डू नॉट चेंज डायरेक्शन यू मे एंड अप वेयर यू आर हेडिंग। इस तरह की बात 7 हैबिट्स वाली बुक में भी स्टीवन कोवी ने की है कि आपके पास मैप क्या है जिसको यूज़ करके आप जा रहे हो। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, वैशाली जी। In the 3rd century BC, King फिर पायरस ऑफ King P. Pyrrhus of Epirus मुझे भी नहीं rose. पता राइट प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं, लेकिन लेट इट बी। Epirus rose to power as the little-known leader of an expanding territory in Greece. A second cousin of Alexander the Great, he developed a reputation as a strong and strategic military leader. आवाज ठीक है ना मेरी? आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। By 280 BC, he had waged successful wars all वेज over the ही हैड by वेज 280 by 280 BC, he had waged successful wars all over the peninsula and consolidated his power across much of the region. But his military fortune would soon change. In 280 BC, King Pyrrhus Pyrrhus received a request for support from the southern Italian city-state of Tarentum, which was at war with the Roman Republic. While Tarentum was not an explicit ally, King Pyrrhus सिंपल। हर टाइम मुझे पीवाई देखते एकदम किंग तो पी हाँ, यस। King, King P recognized the threat that an expanding Roman Republic would pose to his power. Seizing upon the idea that the enemy of my enemy is my friend, he sailed to southern Italy with his large and well trained army, ready to beat back the Roman invaders. The battle, which was fought on a plain near the town of Heraclea, was initially quite lopsided, with King P forces overwhelming the ragtag Roman army, whose generals had clearly been expecting to walk over their tiny Tarentum foe. The Romans rallied, however, and pushed back to great effect, staining the plain red with days of bloody hand-to-hand combat. By the end of the battle, King P was able to declare victory, but at an exceptionally high cost, losing many of his best soldiers, including his lead general. Despite the losses, King P sensed an opportunity to extend the influence of his kingdom into southern Italy, and he decided to press forward, engaging the Roman enemy for the second time near the town of Asculum. Yet again, King P was able to declare victory, but only after days to painful combat that left his army physically and mentally decimated. At, at the end of the battle, King P is said to have exclaimed, "Another such a victory, and we are undone." His hand effectively forced by the cost of these victorious battles. King P of Epirus withdrew from Italy and returned home, where he would wage a few inconsequential campaigns before dying in relative obscurity in battle 5 years later. But it's not all bad for King P, whose desire to leave a legacy
led him into those ill-fated battles against the Romans. His name indeed does live on, though perhaps not in the way he intended. The term Pyrrhic. Pyrrhic, the, the term Pyrrhic victory now refers to the victory won at such a steep cost to the victor that it feels like a defeat. The victory damages the victor beyond repair. He wins the battle but loses the war. This is not just a random history lesson. This is important. A Pyrrhic victory is what you need to avoid in your own life. And unfortunately, a Pyrrhic history could be where you reheaded if you don't change direction. You are walking this perilous path because of one simple mistake. You are measuring the wrong thing, money. When a measure of performance becomes an explicit, stated goal, humans will prioritize it, regardless of any associated and unintended consequences. बच्चे पढ़ूं ना मैं? हम्म You blind yourself to everything else, focusing on the single measure, no matter the costs elsewhere. Every new promotion, pay raise, and bonus feels like a win as you ignore the painful losses war of a war slowly. Slowly slipping through your fingers. Slipping through your fingers, money has become not only the measure but the explicit stated goal. ओके, यहाँ पे थोड़ा पॉज करते हैं। तो इससे एनएलपी का कोई कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहा है स्नेहा जी, अगर आप बताना चाहें तो, या कोई भी बताना चाहे जिनको थोड़ा आइडिया है। तो एनएलपी में हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कराते हैं फ्रेम्स के बारे में। वैशाली जी, आपने टर्म तो सुना होगा कई बार। तो उसमें एक इकोलॉजी फ्रेम है ना, याद है? वर्ड तो सुना, मतलब वर्ड तो याद है मुझे, इकोलॉजी फ्रेम। इकोलॉजी फ्रेम का यही मतलब है जो इसमें बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के किसी एक एरिया में सक्सेसफुल हो रहे हो, आप एक्सेल कर रहे हो, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स। तो वो कह रहे हैं कि आपने युद्ध तो जीता, फायरिक विक्ट्री, मतलब एक ऐसी विक्ट्री तो आपने जीती, लेकिन आपने उसके पीछे इतना नुकसान उठा लिया तो क्या ही फायदा उसका। द विक्ट्री डैमेजेस द विक्टर बियॉन्ड रिपेयर। आप जीत गए लेकिन इतना नुकसान करके जीत गए तो फायदे क्या। या जैसे कहते हैं ना कि 2 कदम आगे बढ़े पर 4 कदम पीछे चले गए। तो इकोलॉजी फ्रेम यही होता है एनएलपी में भी, कि हम लाइफ के किसी एक एरिया में सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मे बी अवर फिजिकल हेल्थ, मे बी एट द कॉस्ट ऑफ अवर फैमिली टाइम, मे बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो जब तक हम ये इकोलॉजी फ्रेम माइंड में नहीं रखते तो हमारी जो सक्सेस है या हमारी हैप्पीनेस है वो राइट डायरेक्शन में नहीं जाती। तो ये इन्होंने वॉर के मेटाफर को यूज़ करके ये बताया, यू ब्लाइंड योर सेल्फ टू एवरीथिंग एल्स, फोकस ऑन सिंगल मेजर। तो आपको आपको पता चलेगा अधिकतर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं किसी भी एक फील्ड में, उनको सक्सेस का टेस्ट ऐसा लग जाता है कि वो फिर हर चीज़ की कॉस्ट पे वही चीज़ करते हैं, और फिर एक एक टाइम ऐसा आता है कि वो ऊपर से नीचे एकदम से गिर जाते हैं अगर नहीं संभलते तो। सो द war you wage is about happiness, fulfillment, loving relationships, purpose, growth and health. If all the battles you are fighting are exclusively about money, you may win these battles but you will lose the war. वॉर यानी एक बिगर हमारा गोल है, और बैटल क्या है, मींस गोल है उसके हमारे लिए छोटे छोटे। अगर हमारे बैटल सिर्फ मनी के बारे में है तो वॉर तो हम हार ही जाएंगे, जीवन का जो युद्ध है। द वार्निंग साइंस ऑन द पाथ डोंट इन्वॉल्व लॉस ऑफ लाइफ एंड लिम्ब लाइक दे डिड फॉर किंग फायरस,
but they aren't pretty. तो क्या वार्निंग साइंस है? You hit another quarterly profit target but miss another anniversary dinner. क्वार्टरली प्रॉफिट टारगेट तो मीट कर लिया, लेकिन हम क्या भूल गए? एनिवर्सरी डिनर मिस हो गया. You earn a record bonus but fail to make it to a single one of your child's sports games. बहुत सारी हम मूवीज में, वेब सीरीज में ये देखते हैं, पेरेंट्स नॉट एबल टू मेक टू द स्पोर्ट्स डे फॉर देयर चिल्ड्रन. You say yes to every single work call but can't find time to reconnect with an old friend. बिल्कुल सही बात है. You stay in a job for the security but allow your higher order purpose to wither and die. हो ही रहे. You host 5 client dinners per week but can't walk up the stairs without feeling winded. You never leave money on the table but won't think twice about leaving your peace of mind there. If you march ahead, eyes fixed on the financial horizon, the Pyrrhic victory awaits. तो जो हाल किंग फायरिस का हुआ वही हम सबका होगा अगर हम समय रहते नहीं संभले तो ये इसमें हमने समझा. किसी को ऐड करना है इसमें? कुछ कुछ बात याद आ रही है तो? ये एनालॉजी बहुत अच्छा है, बैटल एंड वॉर. हम्म. यस. इसलिए कहते भी हैं, कहावत भी है, चूज योर बैटल्स वाइजली. हम्म. ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं.